Hello, good evening, and welcome to this real life magic show. Sorry for this half an hour delay. I was very engaged in the DAF sessions. Thankfully, today is the last day of those sessions. So from tomorrow, none of these delays will happen. I'm doing well. Hope you're all doing well also. अभी तक इस कोर्स में आपने कई बार जादू देखा है, but most of the times our word magic, this word magic is actually related to UPSC mains. Today this word magic is going to be related to today be related to real life. Today I will show you real life magic, actual magic. अभी तक तो मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दिखा के उसको मैजिक बोलता था, आज मैं आपको रियल लाइफ मैजिक दिखाऊंगा, रियल लाइफ एक्चुअल होता हुआ आपके सामने. ठीक है, चलो. Yesterday we were studying something related to the idea of speculative demand for money and transactive demand for money. I hope आपने जाके रिवाइज किया हो. I hope you have revised that topic. थोड़ा बहुत आपने जाके पढ़ा हो. I really hope, because एक बार मैं आपके साथ दोबारा रिवाइज करूंगा. आज हम ये जो मनी वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, we are right now reading this chapter on money. Today we mainly understood something called why money. Then we understood something called demand of money. In this we understood the transaction demand, and we were in the middle of understanding the speculative demand of money. Then we will today understand also something called money supply, and mainly our focus today will be on this topic, speculative demand of money. When we understand speculative demand of money, along with this we are going to understand two other topics, which are bond prices, asset prices, nominal prices, premiums, discount, and relationship between. We will also understand the relationship between the interest rates, the general interest rates in the economy, and asset prices. And effectively यही हमारा जादू है आज का. थोड़ा बहुत हमने इससे रिलेशन में कल देखा था. We saw this a little bit of this yesterday, कि interest rate कैसा होगा, तो will I buy or sell. We saw this in relation to a parcel of land. आपको याद होगा, एक land के parcel के basis पे I had decided कि मैं वो land खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा. This sort of example we were studying yesterday. Now this is a slightly complicated concept, but if we understand this concept, there have been 25 questions on this one concept. There have been 25 questions in the UPSC prelims in the past 10 years. Today we will also see those 25 questions. तो आज हमें इस चीजों को खत्म करना है, प्लस जो हमारे 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक बार उनको देखना है. राइट, कुछ टॉपिक्स हमने पहले ही देख लिए थे. ये मनी सप्लाई से रिलेटेड 25 पीवाईक्यूज हैं, वो भी हम आज 21 और 25, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. दैट क्वेश्चन आल्सो, दोस क्वेश्चंस आल्सो वी विल सी टुडे. नाउ yesterday we had started this chapter of money. Here we had started with why money, because there were some problems in the barter system. Just a quick revision of what we were studying yesterday. To solve problems of the barter system, we need a common entity that facilitates these transactions. इसके क्या characteristics होने चाहिए थे? There needs to be a permanent and perpetual want. There needs to be scarcity. ऐसा हमने देखा था, gold was a good currency that was filling both these characteristics, but then we saw that there were other characteristics also, such as storability, fungibility, non-counterfeitability, and availability as medium of exchange. When we came to the idea of gold, we understood that there was limited availability and limited fungibility. There was availability and fungibility, but it was fairly limited, because you could not divide gold beyond this. Then paper money was born. So I just substituted some paper notes as a promise for delivery of gold. Right? This paper note itself had no intrinsic value, but this promise had value because you were believing my promise that if you bring me back the paper notes, I will give you the concurrent amount of gold that was written on the paper note. 100 paper notes for 0.01 gram of gold. So
for my promise to have value, I must have the ability, the capability to fulfill my promise. Rather, you must think that I have the capability to fulfill my promise. This time we studied something called the full reserve system or the gold standard, right? उसके बाद we understood the problems of the gold standard. ये एक topic रह गया, trade with the gold standard. I'll just understand. ये वैसे topic history का है, but still we will understand this topic. This in itself is a जादू which will help. आपने modern history I hope काफी लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत चीजें modern history की आपको यहाँ पे समझ आएंगी. But we will leave this for now. We then understood assets and liabilities. Then we understood that in this full reserve system, there is a problem that I cannot have growth and I cannot buy very small items because again, there is limited division and growth is not possible. So then I came up with proportional reserve system. In proportional reserve system, I increased the number of currency notes that were circulating, right? So because I was able to demonstrate the capability and I knew that only 1/3 of the people actually come to exchange their gold with me, right? So I only need 33% of the gold. That means whatever gold I have, I can actually issue 3 times paper notes relative to that. So there was 1000 kg of gold. I decided that I will create a virtual gold of 2000 kg. The government will simply give a promise to the central bank. Now I need to divide between government and central bank to execute this proportional reserve system. I will say that government will say I promise to pay central bank 2000 kg gold for 200 crore banknotes. Now on the central bank's balance sheet, the assets are 1000 kg gold and a promise of 2000 kg gold. On the basis of this, they can now issue 300 crore paper notes, even though the actual gold was still only 1000 kg. But we were able to create a fractional reserve system. Only a fraction of it was kept as reserve. This we studied yesterday. Now, modern money, then we came to inconvertible money. Inconvertible money or modern money. In modern money, I said that I want to delink my currency and gold. So, I can issue even more currency. Now, gold was solving 2 problems. One problem was of value. One problem was of acceptability. I enforced value through an order. So I called this order a fiat, and the money enforced value through this order. Money that has value through this order was called fiat money. This fiat money then became, the definition of this fiat money became in the form of a coin and currency, and value is issued by the order of the authority, right? This became fiat money. Now the problem was acceptability. To counter acceptability, then I came with legal tender. For legal tender, I said there is fiat money 1 and cannot be denied while extinguishing debt. So now I solved the acceptability problem also through a legal order. Then came the concept of legal tender. Legal tender was also further divided into limited and unlimited legal tender. Now, from my proportional reserve system or fractional reserve system, where I was keeping only 1/3 of my currency as reserve in gold, I have now completely delinked gold and my currency and come to something called a minimum reserve system. RBI will still keep some minimum reserve of gold. How much that is, this we'll see in international economics, right? Disadvantage of the system was that people will continue to print money. People will just start to print money without any control. But this is not the disadvantage of the system. This is merely government not acting responsibly and printing more money, right? We also saw that if too much money is printed, right, then people will stop believing in it because now there is no gold to back it. There is only a belief. The belief will go away. So this we had understood. From here, we were understanding the demand of money. We first understood transaction demand of money. In transaction demand of money, we were trying to understand 2 things. What is the money circulating? The money circulating and the velocity of money. Money has changed hands here 3 times. Money circulating was rupees 500. This was the total value of transactions. This is the total expenditure in the economy, which is equal to the total output of the economy, which is equal to the GDP of the economy, which is equal to price level into output. So we equated these 2 things. From this, we came to this equation.
that money demanded for transactions is equal to price level. Money demanded for transactions is equal to price level into real GDP or real output divided by velocity of money. So money demanded for transactions is equal to price level into real output divided by velocity. From here, we came to the relation between price level and money in the economy. ये पहली इक्वेशन हमने समझी थी, ये दूसरी इक्वेशन हमने समझी थी, प्राइस लेवल एंड मनी. When we understood this equation, we understood that there were two perspectives. One was the Keynesian view, one was the classical view, but both views agreed on the fact that amount of money is fairly important when determining price level, right? So you can change the money in the economy and change the price level, right? So you can change the money in the economy and you can change the price level. This we had studied yesterday. Then we came to speculative demand of money. Now, yesterday I had explained to you this logic of parcel of land. How the price of this parcel of land is actually varied on the basis of interest rates. यहां तक हमने कल समझा था, यहां तक आपको याद है, समझ आ चुकी हैं सारी बातें, यहां तक हमने समझा था. We will relook at this example now through the example of government bonds. But यहां तक क्लियर है? So far I hope there is no problem. Everything is clear and understood so far. ये तो कल ही पूरी क्लास एक बार मैंने रिपीट ही कर दी है ना. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट टू डू फर्दर. अब यहां से समझते हैं इसी चीज को दोबारा. देखो, let's say I have an income. Whatever income I have, I will use some of this for transactions. The other of it will be surplus. अब next 1 hour please pay attention. ठीक है, प्लीज चैट स्पैम मत करना अगले 1 घंटे के लिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस. If you are going to understand this, all of the 25 questions that I'm going to show you will become solvable. ठीक है. Income, I have some income. Let's say my income is 1 lakh rupees. From this, my transaction is 30,000 and my surplus is 70,000. Now, what happens to this 70,000 if I just keep it under my mattress? मैं अपने बेड के नीचे इस 70,000 रुपए को रखूंगा तो क्या होगा? Eventually, because of inflation, we studied this concept of time value of money. Eventually, because of inflation, its value will go down, right? So I will want to protect this. I will want to protect the value of this 70,000, right? I will want to protect the value of the 70,000 at least similar to the value of inflation. If inflation in the economy is at least at, let's say, 6%, I would at least want a 6% return. उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाए तो बहुत बढ़िया. ठीक है. Now, the only way to protect this value is to put this into an asset. Asset liabilities का concept हमने कल देखा था. Now, अब let's look at what asset classes are available to me. मेरे पास कौन कौन सी asset classes available हैं और मैं कैसे decide करूं कि कौन से asset class में क्या डालना है. One asset class is like savings account. एक asset class है savings account जैसी. And one asset class is similar to, many things are there but they are all similar, like land, stocks, bonds. These are gold. These are various other asset classes. ठीक है. इन दोनों asset classes में फर्क क्या है? This asset class is relatively risk free. आपने कभी सुना है कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल के लॉस हो गया? राइट? नहीं होता. क्योंकि बैंक विल कंटिन्यू टू लोन एंड बैंक विल कीप गिविंग यू बैक मनी. दिस इज अ रिलेटिवली रिस्क फ्री एसेट क्लास. राइट? सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालो, पैसा जाएगा कहीं नहीं. इन्फ्लेशन बीट करेगा या नहीं वो एक अलग कहानी है, बट पैसा ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपीज डाले कल 2 रुपए रह गए. राइट? दिस एसेट क्लास इज अनलिमिटेड. आपको 10,000 करोड़ रुपए भी सेविंग्स अकाउंट में डालने हो तो बैंक आपको कहेगा डाल लो.
Bank will say, no problem, you can put 10,000 crore rupees in our savings bank, no problem. But this asset class has a low rate of interest. जो इस पे रिटर्न है वो काफी कम है. For today's discussion, we will assume that savings accounts give 5% rate of interest. यहां पर 5% rate of interest मुझे मिल रहा है. ठीक है, दिस इज वन सेट ऑफ एसेट क्लास. अनलिमिटेड है, रिस्क फ्री है, बट क्योंकि रिस्क फ्री है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपको रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिलेगा. टिल इट इज रिस्क फ्री, it is low return on investment. Low return on investment is 5%, right? This is 5% rate of interest. Now, for the purpose of today's class, to understand this logic, we will assume that there is no inflation in the economy. हमने समझ लिया logic of putting it into assets. अभी we will assume कि कोई inflation नहीं हो रही है. We will assume that inflation is zero. For the purpose of understanding this speculative demand, we will assume inflation is zero. ये 5% जो savings bank दे रहा है, इसे हम कहेंगे, again for the purpose of today's class, we will call this the general rate of interest in the economy. General rate of interest. Okay. Now, ये जो टाइप ऑफ एसेट क्लास है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ एसेट क्लासेस हियर. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस हियर. ये जितनी भी एसेट क्लासेस हैं इनकी पहली चीज है ये लिमिटेड है. लैंड इज नॉट अनलिमिटेड, स्टॉक्स आर नॉट अनलिमिटेड. देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट. देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल इन इंडिया. दीज एसेट क्लासेस आर रिस्की एसेट्स. ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टॉक्स में पैसे डाले तो हमेशा रिटर्न पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, राइट? एंड बिकॉज दीज आर रिस्की, देयर हैव अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि ये एसेट क्लासेस रिस्की हैं, इनमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है, तभी कोई इन्वेस्ट करेगा रिस्की जगह पे, है ना? नाउ लेट अस सी हाउ द प्राइसेस ऑफ दीज टू आर गोइंग टू वेरी. हमने कल लैंड से एग्जांपल समझा था, बट अब हम क्या करते हैं टुडे, टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, हम ये सारी एसेट क्लासेस को साथ में स्टडी तो नहीं कर सकते. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल थ्री आर सेम, बट आई कांट स्टडी लैंड देन स्टॉक्स देन बॉन्ड्स देन गोल्ड. द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम. सो लेट्स स्टडी ऑल ऑफ देम थ्रू द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स. हम एक को स्टडी कर लेते हैं. अगर हम एक को स्टडी कर लेंगे तो हम सबको स्टडी कर लेंगे, राइट? बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो हमें तो ये चीज समझनी है, ये दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. तो फ्रॉम इफ वी अंडरस्टैंड जस्ट बॉन्ड्स, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अब फर्स्टली, बिफोर आई टीच यू this through government bonds, let's understand what is the meaning of the word bond. The word bond means not 007. The word bond means a simple promise to repay. Bond is an instrument of debt. Simply speaking, person A gives rupees 100 to person B. Person B gives a piece of paper, and on this piece of paper he writes, promise that I will repay rupees 100 to you in 1 year with a rate of interest of 10%. This is a government bond. This is a bond. This piece of paper, a promise to repay, is bond. It is an instrument of debt. B has taken debt of 100 rupees. So B will say on this piece of paper that I will repay to you rupees 100 in 1 year at a rate of interest of 10%, and I am writing this promise on, I will write this promise on a piece of paper. This promise of repayment written on a piece of paper is called a bond. Bond can be issued by anyone. I can issue a bond to you. You can issue a bond. कोई भी bond issue कर सकता है. Bond is simply a promise to repay. I can take money from you and write on a piece of paper and sign
that I will give you this money back in 1 year, right? So it is simply a promise to repay. When government makes this borrowing, government says to person A, please give me rupees 100, and here I am writing on a piece of paper that I will give you back rupees 100 with a rate of interest of 10% in 1 year. This piece of paper now has a, let's say, government seal. This itself becomes a government bond, because this piece of paper, this promise of repayment has been issued by the government. Now, bond is simply a debt instrument. A issues bond, a promise to return money with some interest, written on a paper. This paper becomes the bond. B gives money, A gives promise to repay. This promise to repay is simply government bond. Now, what does government bond say? अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड देखोगे या कोई भी बॉन्ड देखोगे, उस पे क्या क्या लिखा हुआ है? One, it says who is the issuing authority. Issuing authority कौन है? Two, what is the face value or what is the amount borrowed. फेस वैल्यू का मतलब है अमाउंट दैट इज बोरोड. यहां पर अमाउंट बोरोड कितना था हमारा? 100 रुपीज. Third thing that is written on a government bond or any bond is interest rate. Interest rate here was 10%. Then fourth thing written here is time of maturity. कितने टाइम में ये पैसा वापस किया जाएगा? Here that time of maturity was 1 year. And generally a bond also writes the purpose. पर्पस क्यों? लेट्स सी. मैंने आपसे 100 रुपीज बोरो किए. यू विल आस्क मी व्हाई आर यू बोरोइंग दिस 100 रुपीज. आप बोरो कर रहे हो, आप प्रॉमिस भी कर रहे हो कि आप रीपे करोगे, बट कोई पर्पस होगा इस बोरोइंग का? दैट पर्पस विल आल्सो बी रिटन ऑन दिस गवर्नमेंट बॉन्ड. सो अ गवर्नमेंट बॉन्ड जनरली विल कैरी ऑल ऑफ दीज वैल्यूज. who is the issuing authority? What is the face value? Face value denotes the amount that was borrowed through this bond. Amount that was, this is very important. This is going to come very handy when we are going to study further. Face value means amount that was borrowed using that bond. Interest rate is whatever interest rate is given, for example 10%. Time of maturity, in how much time this money is going to be repaid. And purpose, for what purpose were you borrowing? क्यों आपने borrowing करी? Right? These things you write on a bond. Let's say government is issuing a bond. Government issues a bond of rupees 100, says rate of interest is 10%, says the purpose of this is to build schools. Right? Government ने कहा कि we will issue a bond of rupees 100, rate of interest is 10%. The purpose of this bond is to build schools. To build schools, we actually need total 1 lakh rupees. हमें 1 lakh rupees चाहिए to build schools. आज, today we are out of money. We need to borrow 1 lakh rupees. We need to build schools today. And next year we will repay this with a rate of interest of 10%. So government is effectively saying, government says that I want to borrow 1 lakh rupees so that I can build schools. Whoever pays me this 1 lakh rupees, I will repay with 10% rate of interest in 1 year. For 1 lakh rupees, government issues 1000 bonds of rupees 100 each. Government issues 1000 bonds of rupees 100 each. Now each bond, for every single bond, each bond now has face value of rupees 100. Rate of interest, face value is simply money that is borrowed through here. Rate of interest is 10%.
Time period of maturity is 1 year. Purpose is to build school. अब ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं मार्केट में? 1000 बॉन्ड्स हैं ऐसे मार्केट में जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. Now, this is the market as it stands today. In this market, what is the general rate of interest? Which is the rate given by savings accounts. In savings accounts, the general rate of interest is 5%. Okay. Now, let us see. Let's write individual A. Individual A wishes, I'll write it a different color. Individual A wishes that he wants 110 rupees next year. He wants his wealth to become 110 rupees next year. Individual A चाहता है कि मेरी wealth next year 110 रुपए हो जाए. How much money would he have to keep in a savings account for this to happen? In a savings account, if he keeps, let's say, obviously it will not be completely 105. It will be somewhere close to 105. 105 से थोड़ा कम होगा. If I keep 105 rupees, हम ये decimal points ignore कर देते हैं. 105 का 5% is slightly more than 5, right? Slightly more than 5. So in a savings account, if he keeps 100 rupees, he will get 105 rupees next year. If he keeps 105 rupees, he will get little more than 110. But for the sake of calculation, let's assume, क्योंकि 5% rate of interest है, it will exactly be 104.76. But for sake of calculation, for sake of ease, let's assume in a savings account, if he keeps 105 rupees, he will get 110 rupees next year, right? If he chooses to go for the government bond, if he keeps rupees 100 here, he will get rupees 110 next year, right? बॉन्ड की अगर हम बात देखें, बॉन्ड में अगर वो रुपीज 100 लगा दे तो नेक्स्ट ईयर ही विल गेट रुपीज 110. बॉन्ड इज इशूड बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने अगर बॉन्ड इशू किया है तो आई एम बिलीविंग दैट गवर्नमेंट इज, आई एम ऑलमोस्ट श्योर दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीपे. इवन द रिस्क इज वेरी लो, राइट? नाउ look at these two asset classes. This is unlimited. This is unlimited, relatively safe, much safer than the bond. Government can possibly default, हो सकता है government repayment ना कर पाए, यहां तो default नहीं होगा. So this is that first asset class, unlimited, safe, low rate of interest. This is limited. 1000 ही ऐसे bonds हैं market में. Limited, slightly risky, but better rate of interest. Now, any rational human in this situation, what decision will they make? They will want to buy this bond. Any rational human will want to buy this bond, है ना? Because यहाँ पर rate of interest 10% मिल रहा है, यहाँ 5% मिल रहा है. So everyone will want to buy this bond. सब चाहेंगे कि हम ये bond खरीद लेते हैं, भाई better है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, right? But only 1000 people have this bond. क्योंकि 1000 थे, there were only 1000 bonds. So 1000 people actually got to buy these bonds directly from the government. बाकी किसी को नहीं मिला. लॉटरी लगी 1000 लोगों की, जिनको ये बॉन्ड मिला, बाकियों को नहीं मिला. So now this is the base at which we will start our discussion. Savings में you put 105 rupees, you get 110 rupees. Bond में you put 100 rupees, you get 110 rupees. There are only 1000 bonds guaranteed by the government. 1000 people have these bonds. If there is a limit of 1 person per bond, nobody can keep 2. 1000 people have these bonds. Savings account पे जो rate of interest, general rate of interest मिलता है वो 5% है. ठीक है? अब यहां से हमारी डिस्कशन हम शुरू करके सारी चीजें समझने वाले हैं. इस सब में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. इस सब में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहां तक तो कुछ नहीं है. ऑल्दो आई नो ऑलरेडी इतनी बार बोलने के बाद भी देयर आर सो मेनी कमेंट्स इन द चैट व्हिच हैव नथिंग टू डू विद व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, बट एटलीस्ट दिस मच शुड बी क्लियर. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
है ना, ये तो बेसिक है। अब यहां इस चीज को याद रखना है आपने, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स नाउ। Right, everything else now to remember or and to understand, we have to keep this as our base information. This is slide number 4. I will keep coming back to this slide over and over again to explain today's logic. अब देखो आगे देखते हैं। 1000 people have this bond. 1000 people have this bond. This bond is 100 rupees going to become 110 rupees in 1 year. ठीक है। Person A wanted how much money? Person A wanted कि उसको 110 रुपए मिल जाए। To get 110 rupees right now, he has to keep 105 rupees in the savings account. So person A will think, let me try something new. Person A will go to one of these 1000 people, or he will go to all of these 1000 people and say, please sell me this bond for 101 rupees. आपको एक साल बाद 10 रुपए मिलेंगे, बॉन्ड आज इशू हुआ है, you will get 110 rupees 1 year later. I am giving you 101 today. आप अभी खरीद के आए हो गवर्नमेंट ऑफिस से बाहर, अभी आप मेरे से 101 रुपए लो और आप रख लो और मेरे को यह बॉन्ड दे दो। Right? Is this transaction beneficial for person A? Of course, because in a savings account, for person A in savings account, what is the transaction? 105 to 110. If he is able to buy this, what will be the transaction? 101 to 110. है ना? So he says, sell this to me for 101 rupees, and let's say someone agrees. For some reason, someone agrees to sell. Ideally, they should not agree to sell, but someone agrees कि ठीक है यार, मुझे अभी 1 रुपए मिल रहे हैं, मेरे को अभी फायदा हो गया ना, बाकी बात की मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं बेच देता हूं। Now let's look at the situation of person A. What happened to person A now? अब ध्यान से देखो situation of person A. Person A now holds a piece of paper. What is written on this piece of paper? On this piece of paper, it is written face value equal to 100, rate of interest equal to 10%, time period of maturity 1 year, purpose equal to schools. है ना? This is true. Person A now holds this piece of paper. On this piece of paper, these things are written. यही चीजें लिखी थी पहले भी. When after 1 year, what will A do? After 1 year, A will go back to the government and say, take this piece of paper, give me my 110 rupees. आपने प्रॉमिस किया है ना कि piece of paper पे ये चीज लिखी हुई है कि 1 साल बाद आना, ये piece of paper हमें वापस करना और हमसे 110 रुपए ले लेना. This is exactly the promise that is written here. So 1 year later, A will go back to the government and say, take this piece of paper and give me my 110 rupees. Correct? What is the earning or final value of money with A? How much money has he made now? What is the final value? Final value that A will get after 1 year now is 110. Government will give him 110 rupees. Correct? He will get 110 rupees. What is his effective earning? Effective earning here is 9 rupees because he has spent 101 rupees to obtain this piece of paper. His effective earning is 9 rupees because he has spent 101 rupees already. इन्होंने यहाँ 101 rupees खर्च किए. He has spent 101 rupees. For person A, spending
is 101, receipt after 1 year is 110, earning becomes 9 rupees. Let's look at any one of these 1000 people. कोई इनमें से एक 1000 लोगों की बात करते हैं, इनमें से एक 1000 लोगों की बात करते हैं who had not sold, जिन्होंने अपना बॉन्ड सेल नहीं किया, ठीक है। इनकी स्पेंड क्या थी? व्हाट डिड दे स्पेंड हियर? दे स्पेंड ₹100. What is the return they got? ₹110. And their effective earning was ₹10 from this bond. So these people जिन्होंने अपना बॉन्ड सेल नहीं किया, इनको मिले 10 rupees. Effective earning for these people was ₹10. यहां पर effective earning is 9 rupees. Right? This much is also clear. अब देखो, this effective earning, this term effective earning in economics is referred to as yield. Yield of the bond, effective earning from the bond. What is A's yield? 9 rupees. What is their yield? 10 rupees. Why is there a difference? There is a difference because A has purchased this bond at a higher value. A has purchased this bond at a higher value. Right? Now, if A would have purchased this bond for 10,000 crore rupees, or 5 rupees, or 20,000 rupees, would it have changed anything with regards to government payback? मान लो मैं ये बॉन्ड ए से करोड़ रुपए में खरीद लूं, तो भी गवर्नमेंट तो मुझे 110 रुपीज ही वापस करेगी ना। गवर्नमेंट को क्या लेना देना मैंने आपस में क्या किया, राइट? मैंने आपने आपस में क्या ट्रांजैक्शन करी, उससे गवर्नमेंट को क्या लेना देना। गवर्नमेंट ने तो लिखा है इस पेपर को आप 100 रुपए में खरीद सकते हो, और आप अगले साल आओगे तो इस पेपर को आप 110 रुपए में वापस हमें बेच देना। इतना ही बोल रही है। आप उस पेपर का कुछ भी करो, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। इनमें से एक 1000 पीपल को मान लेते हैं बी। लेट्स सी वन ऑफ दीज पीपल एज बी हु डिड नॉट सेल देयर बॉन्ड। B did not sell their bond. A has purchased the bond from someone else. In the case of A, spending is 100 plus 1 rupees, which is 101 rupees. Earning, total earning is 110, and effective earning is 9 rupees. In the case of B, what did he spend for this piece of paper? ₹100. What did he earn after 1 year? ₹110. And what was his effective earning? Effectively, he has made 10 rupees. This gap of 1 rupee, 9 rupee versus 10 rupee, ये क्यों आ रहा है? Because A decided that I will purchase this bond from someone else at the face value. Face value of this bond is 100. Amount borrowed is face value. A has decided that I will purchase this at a face value plus some money. I will offer him 101 rupees. क्यों उसने 101 ऑफर किया? क्योंकि उसे पता था कि दूसरा ऑप्शन सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का है। सेविंग्स अकाउंट में तो 105 देने पड़ेंगे, तो इसको 101 ही दे दो, है ना। सो ही हैज पेड 1 रुपी एक्स्ट्रा फॉर दिस बॉन्ड। उसे लॉटरी में नहीं मिला, उसने 1 रुपी एक्स्ट्रा पे किया ना, 1 रुपी एक्स्ट्रा पे। इसको तो 100 रुपीज में ही मिल गया। ही पेड 1 रुपी एक्स्ट्रा। दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज कॉल्ड प्रीमियम। He has paid something extra to get this bond other than the other 999 people who hold this bond. The other 999 people have spent 100 rupees on this bond. He has spent 1 rupee extra. This is called the premium, right? What is the word used for effective earning? Word used here is yield. Word used here is yield.
ठीक है, तो अभी हमने देखा हायर वैल्यू स्पेंड, फेस वैल्यू से ज्यादा स्पेंड किया तो हम कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, नाउ लेट्स से दिस बी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, बी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और बी मुझे कहता है कि जस्ट बिकॉज शिवन यू आर माई फ्रेंड आई विल सेल यू दिस बॉन्ड फॉर ₹99। क्यों करता है वो हम देखेंगे बाद में। I will send you this bond for ₹99, right? ₹99. I will sell you this bond. Now, what is my spend on this bond? ₹99. Or I can say ₹100 minus 1. What is my earning? Same 110. ये तो चेंज ही नहीं हो रहा. And what is my effective earning? What is effectively my earning now? ₹11. So now I have paid ₹1 less. I have paid ₹1 less than the face value. जो बॉन्ड पे ₹100 लिखा हुआ है उससे मैंने ₹1 कम पे किया है. This less payment than face value is called discount. I got a discount. ₹100 लिखा हुआ है उस पर मुझे 99 में वो दे दिया क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है. And this is my effective earning. This is my yield. Terms clear हुई? Premium, discount and yield. Are the terms clear? Terms are clear? है ना? Now, what is bond here? Bond is giving a future stream of benefit. So bond is a type of asset here. Bond is an asset, like land is an asset, like stocks are an asset. Bond भी एक type का asset है. Here, है ना? अब, what is the price of the asset in this case? In A's case, what is the asset price? For how much price has A been able to obtain this asset? The asset price in case of A is ₹101. 101 रुपए में वो इस एसेट को ऑब्टेन कर पाया. In case of A, asset price is ₹101, which is ₹100 plus premium. ₹100 is a face value of this bond. No matter how much I sell this bond for, मैं ये मार्केट में बेचूं, मैं ये मार्केट में कितने भी पैसे में बेचूं, कुछ भी करूं, इस एसेट की फेस वैल्यू तो ₹100 ही रहेगी. बॉन्ड पे छप चुका है ₹100, पेपर पे छप चुका है ₹100. चाहे मैं 10,000 करोड़ रुपए में बेच दूं, ये तो चेंज नहीं होने वाला ना, है ना. दिस इज अ कांस्टेंट. ये ₹100 इज नाउ कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ वट एवर बिकम्स द प्राइस. चाहे कुछ भी प्राइस हो जाए, चाहे ₹99 में बेचो, चाहे 100 में बेचो, चाहे 101 में बेचो, चाहे 10,000 में बेचो, यहां पर तो आपको सिर्फ ₹100 ही छपा हुआ मिलेगा. करेक्ट? सो कैन आई से दैट एसेट प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम. जितना ज्यादा प्रीमियम दोगे उतना ज्यादा एसेट प्राइस बढ़ जाएगा. जितना कम डिस्काउंट, जितना कम प्रीमियम होगा, जितना कम प्रीमियम होगा, प्रीमियम नेगेटिव में हो जाएगा तो डिस्काउंट हो जाएगा, तो एसेट प्राइस कम हो जाएगा. है ना? क्योंकि फेस वैल्यू तो छप चुकी है. फेस वैल्यू इज नाउ, फेस वैल्यू तो प्रिंट हो चुकी है, वो तो चेंज नहीं होने वाली. ये तो कांस्टेंट है. इस वैल्यू से डिटरमाइन होगा ये कितने में बिकता है. सो एसेट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम. हायर द प्रीमियम, हायर द एसेट प्राइस. करेक्ट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है. एसेट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम. ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके. नाउ
there are 1000 people. Let's get back to where we started. There are 1000 people who hold this bond. There are 1000 people who hold this bond. A goes to one of them and says, I will buy for rupees 101. A knows that to get 110 in savings account, this is the equation. This is the savings account equation because the rate of interest in savings account is 5%. So even if I am getting it 101, it is beneficial. अब ए कहता मैं 101 में खरीद लूंगा, बी कहता 101 में क्यों खरीदता हूं, मैं तो 102 में खरीद लूंगा. दिस लॉजिक वी हैव स्टडीड यस्टरडे. बी कहेगा मैं 102 में खरीद लूंगा. सी विल से मैं 103 में खरीद लूंगा. डी विल से मैं 104 में खरीद लूंगा. यही हमने कल पढ़ा था. डी विल से आई विल बाय इन 104. अल्टीमेटली someone will come and say I am going to buy this. Let's say E will come say I am going to buy this in 105. Now beyond 105, will the price increase? Will the price increase now beyond 105? अब क्या 105 के ऊपर प्राइस जा सकता है? नहीं, क्योंकि इफ यू नाउ वांट टू पुट योर मनी हियर, ये ऑप्शन पड़ा है, ये सेफर ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन तो एज इट इज पड़ा है. ठीक है. नाउ ई परचेजेस दिस फॉर 105, राइट. अब ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, ये बात गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे ही मैंने 100 रुपीज में ये बॉन्ड बेचा, 1000 लोगों को मिल गया, राइट. जैसे ही मैंने ये बॉन्ड बेचा, 1000 लोगों ने आके खरीद लिया, ये 1000 लोग बाहर जाते ही इसको 105 में बेच देंगे, है ना. ये बात गवर्नमेंट को समझ आ रही है ना, कि जैसे ही, क्योंकि ये प्राइस यहां पहुंच जाएगा, देयर विल बी बिडिंग. चलो 105 पे नहीं, 104 पे तो पहुंच ही जाएगा. गवर्नमेंट को ये बात पता है दैट इफ आई सेल दिस बॉन्ड फॉर रुपीज 100 to 1000 people, these people will simply step out of the government office and sell this bond for 105 rupees. लोग बाहर तैयार खड़े हैं 105 रुपए का खरीदने के लिए, है ना. तो गवर्नमेंट कहेगी यार हम ही 105 रुपए बेच देते हैं. Why should I miss out on these 5 rupees? मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. Why should I miss out on this? मैं 105 रुपए पे ही बेच देता हूं. एंड इवन इफ गवर्नमेंट सेल्स फॉर 100 रुपीज, गवर्नमेंट कहती है नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं 100 रुपए पे ही बेचूंगा, तो भी इसका प्राइस ऑटोमेटिकली 105 रुपए हो जाएगा इंस्टेंटली. 1000 लोग बाहर निकले, बाहर 1 करोड़ लोग खड़े हैं 105 रुपए लेके कि हमें दे दो, या 104.999 रुपीज लेके खड़े हैं कि हमें दे दो. इंस्टेंटली प्राइस बिकम्स दिस, है ना. क्लियर, बात समझ आ गई. अब ये प्राइस यहीं क्यों पहुंचा, ये प्राइस यहीं क्यों पहुंचा, इसके ऊपर भी नहीं गया, इसके नीचे भी नहीं गया, बिकॉज दिस प्राइस वॉज इनहेरेंटली लिंक्ड टू द इंटरेस्ट रेट हियर. यहां जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो इसका प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर रहा है, राइट. इट इज नॉट ड्यू टू एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू से किसी को लेना देना नहीं है, इस वैल्यू से सबको लेना देना है. तो इसके 2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं. Let's say the interest rate, the general interest rate in this economy was 4%. आपको मैं, I am giving you 2 minutes now. आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं. Tell me, now tell me, आपको, चलो मैं बताता हूं आपको क्या क्या बताना है. आपको बताना है, you have to answer these questions. Face value, return after 1 year, yield of the bond, प्रीमियम ऑन द बॉन्ड. ये 4 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं. आई विल गिव यू, आराम से सोचना, आई विल गिव यू 3 मिनट्स, आराम से सोचना.
ये 4 क्वेश्चन चैट में इसी ऑर्डर में 1 2 3 4 लिख के आंसर करना।
Sorry for the slightly long break. I had a call. Sorry about that. Had to attend a call. Sorry about that. Now, sorry for the long break. ठीक है, देखते हैं क्या. Let's see what answers you people have written. देखो, face value of this bond is not going to change. Return after 1 year is also not going to change. Now, when rate of interest is 4%, if rate of interest is 4%, if I can ignore the decimals, I can say that the savings bank equation is now 106 gives 110 rupees. It will of course be a little bit less than 106, but for the sake of simplicity, this is now the savings bank equation. This is now the savings equation. The savings equation now says 106 gives 110 rupees. It will be 105.8, but that's okay. If this becomes the equation, what will now become the asset price of this bond? The asset price of this bond will also become equal to 106. The return it is going to give after 1 year is 110. Yield will become 4. Premium will become 6. है ना? यही आया सबका आंसर. This is the answer you have gotten. Premium is now 6. Yield is 4. Asset price is 106. Return after 1 year is 110. Face value is 100. General rate of interest is 4%. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अब decimals ignore कर दो. Let's decimals ignore. If you wrote 5.8 ये वो, that's okay. ठीक है, अभी decimals ignore करते हैं क्योंकि भावना important है, नंबर important नहीं है. ठीक है. Now let's try to make a relationship. Can I say interest rates are directly proportional to yield? When interest rate was 5, yield was 5. Interest rate is 4, yield is 4. When interest rate was 5, asset price was 105. Interest rate was 4, asset price became 106. So can I say that interest rates are inversely proportional to asset prices? This also I can say, है ना? When interest rate was 5, premium was 5. When interest rate is 4, premium is 6. या तो मैं ऐसे इस लॉजिक से ये लिख लूं कि इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम, or it is very simple to come to this equation because I already know that premium and asset price have a direct relationship. तो या तो मैं यहां से पहुंच जाऊं इस बात पे, या मैं ऐसे पहुंच जाऊं इस बात पे. The logic will stay the same. So now I have understood 3 things. ये सेम काम आप इंटरेस्ट रेट को अभी हमने कितना किया, 4% किया. At your home as homework, try and making this interest rate 6%. Make this 6%. Same logic. The logic will not change. Numbers will obviously change. Logic will not change. What is the logic? Interest rate is directly proportional to yield, is directly proportional to 1 by asset price, or inversely proportional to asset price, is proportional to 1 by premium, or inversely proportional to premium. This logic we have so far gotten. From this, if this entire statement is true, then any of these links should also be true. Any of अंदर के भी लिंक्स ट्रू होने चाहिए, सब कुछ ट्रू होना चाहिए. अगर ये बिल्कुल एक लाइन में मैं चारों चीजें लिख रहा हूं,
anything between this should also be true. That will verify this. So let me now consider this. Let me now consider this. This statement by itself, that yield is 1 by asset price or inversely proportional to asset price. This should also be true. ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए. इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं. In case 1, interest rate is 5%. Asset price is 105. Yield is 5. Case 2, interest rate is 4%. Asset price is 106. Yield is 4. As asset price has increased, yield has decreased. Asset price has increased, yield has decreased. Case 3 भी लिख लेते हैं. आपका होमवर्क मैं ही कर देता हूं. Interest rate is now 6%. What is the savings bank equation? 104 becomes 110. Sorry, this is the savings bank equation. Asset price of this bond will become 104. Yield of this bond will become 6. Logic is same. Asset price goes down, yield goes up. So now verifiably I can say that this statement is true. ये please write this down. I know आपके notes में handwritten में लिखा हुआ है. Still please write this down. Interest rates, general interest rate in the economy is proportional to yield, is proportional to 1 by asset price, is proportional to 1 by premium. Please ये चीज लिख लेना. Because we have proven now this is true. है ना? All of these things are true. यहां तक कोई डाउट? इस लॉजिक को समझने में कोई डाउट? Any doubt in understanding this logic? I hope not. ज्योति, आप एक ही चीज कितनी बार स्पैम करोगे? है ना? ये हो गया. अब आप लिख लो इसको आराम से. I'll write it again for convenience. Interest rates are proportional to yield. Interest rates are proportional to 1 by asset price. Interest rates are proportional to 1 by premium. यही बात हमने अभी तक एस्टैब्लिश की है. Now, यील्ड प्रीमियम रिलेशन निकाल लो. जो भी रिलेशन निकालना है, जब यील्ड और एसेट प्राइस का रिलेशन निकाल लिया हमने आनंद, तो यील्ड और प्रीमियम का रिलेशन निकालने में क्या जरूरत? एसेट प्राइस और प्रीमियम तो डायरेक्टली रिलेटेड है ना. प्रीमियम बढ़ेगा, एसेट प्राइस बढ़ जाएगा. एनी ऑफ दीज रिलेशंस विल बी ट्रू. कोई भी निकाल के देख लो, है ना. अब नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, नाउ हमने यहां पर एक चीज देखी थी. रिमेंबर वन थिंग हियर. In this, even no, not in this, even before this, here I told you one thing, that this person agrees to sell his bond. हमने यहां पर एक चीज देखी थी, this selling decision, है ना, कि people are agreeing to sell their bond, right? Now, if people are agreeing to sell their bond, now we have to understand why would someone agree to sell their bond. कोई क्यों ही बेचेगा बॉन्ड को, राइट? अभी हमने अज्यूम कर लिया था, हमने तो बहुत स्टूपिड एग्जांपल्स लिए. कोई मेरा दोस्त है, उसने 99 रुपीज में दे दिया. Why do people make these decisions of selling and buying? When I started this chapter, I gave you a logic. The logic was, we will assume perfect rationality, that everyone is a rational human being, right? The problem is, no, there is no emergency. कोई emergency नहीं है. क्यों कोई डिसीजन लेगा ये बेचने का इस बॉन्ड को? हमने तो ऐसे इस टाइप के नॉन रैशनल एग्जांपल्स लिए हैं. दैट 99 रुपीज मैंने दे दिया बिकॉज दोस्त है, फ्रेंड है, राइट? अब हम रैशनैलिटी को लाके ये चीज समझते हैं. मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं ही आंसर करूंगा. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ठीक है? क्यों, वाई इज दिस सोल्ड?
Right? Now we'll understand this. The next part of this chapter is to understand this decision. I will answer this question. Today it is 18th December 2024. On this day, government says, here are our bonds. Bonds are face value 100 rupees, rate of interest 10%, and time period is 1 year. ठीक है, understood? यही हो रहा है. You can come back to us on 18th December 2025. Give us this piece of paper and we will give you 110 rupees. On 18th December 2024, today, the general interest rate in the economy is 5%. So the savings bank equation is 105 becomes 110. Therefore, because of this equation, today, the asset price of this bond, is 105. The premium here is 105. Sorry, premium here is 5. Yield here is 5. Any doubt still here? ये तो पता है हमें. This is exactly what we have studied so far. यही पढ़ा हमने अभी तक. This is today, है ना? Now, I am an investment banker. As an investment banker, I am also holding this bond. As an investment banker, I know, I have analyzed the Indian economy. आज ये इस state पे है. The asset price is 105, right? I have analyzed the Indian economy. Once I analyze the Indian economy as an investment banker, I know that the general rate of interest currently in the economy is 5%. This rate of interest is too low for the Indian economy. I know that 5% is too low for the Indian economy. Okay? Today it is too low. As per where the economy stands, today it is too low. That means I have an expectation. I will expect that this interest rate will become 6%. I have an expectation that this interest rate will become 6%. At some time, this interest rate, within maybe 6 months, this is going to become 6%. As soon as the interest rate is 6%, what is the savings bank equation? 106 becomes 110. What is the asset price? 106. If I know this, I know this is going to happen, that this asset price is going to become 106. Sorry, my bad. Sorry about that. Small mistake. Sorry, forgive me. Sorry. 104 to 110. Sorry about this. Asset price will become 104. Sorry, now it's correct. Sorry. Now, I know this is going to happen in 6 months. I am an investment banker. I know it is going to become 104 in 6 months. Okay, the price of this asset is going to become 104. Maybe 6 months छोड़ो, it's going to become 104 in 2 days. मुझे पता है 2 दिन में interest rate कम हो जाएगा. Right? I have an expectation that interest rates are going to rise and become 6% in 2 days. In 2 days, if interest rates become 6%, this asset price is going to be 104. Today, you come to me and say, please give me this bond for 105. I will say, take it. I will take the decision to sell. I will say, fine, खरीद लो. तुम्हें कुछ नहीं पता इंटरेस्ट रेट के बारे में. मुझे एक्सपेक्टेशन है. मुझे पता है
I am an investment banker. I know, right? This thing is clear. I will sell. मुझे पता है ये तो 2 दिन बाद 104 रुपए का रह जाएगा, मैं सेल कर दूंगा, right? I have an expectation, right? This logic is clear that I will sell. This logic is clear that I will want to sell. Yes or no? Good. Now, you think अब मुझे तो लग रहा था I am selling to a layman. I thought I'm selling to a layman, some person who has never read about the Indian economy. They were buying my bond, बेच देते हैं. Person who was buying was also an investment banker. This investment banker says that 5% rate of interest, 5% rate of interest is too high. इनका analysis कहता है, the person who came to buy from me said 5% is too high. मेरा analysis क्या था? My analysis was that 5% is too low. The person who is coming to buy, their analysis is 5% is too high. Their analysis is 5% is too high. They think interest rates are going to become 6%. This is their expectation. इनकी expectation है that interest rates are going to become 6%. If interest rates become 6%, what is the equation? Sorry, again, my bad. If 5% is the interest rate and it is too high, their expectation is interest rates are going to become 4%. If their expectation is that interest rate will become 4%, what is the equation? Now the equation is 106 becomes 110 in savings bank. With this equation, the asset price now is 106. So as per this person's expectation, इनकी expectation है कि interest rate will become 4%. Their expectation is interest rate is 4%. At 4%, this asset is worth 106 rupees. My expectation is interest rate will become 6%. So in the future, this asset will be worth 104 rupees. I feel, I'll write it on one slide. Current values. Current interest rate in Indian economy is 5%. Asset price of this bond is 105. Person A has expectation. Nobody knows whether this expectation is true or not. Person A has expectation. Person A has expectation that interest rate is going to become 4%. When interest rate becomes 4%, asset price will become 106. This is me. I have expectation. It is merely my expectation. I don't know. मुझे ऐसा लगता है. This is my analysis. ये मेरी feeling है. This is my expectation that interest rate in the economy is going to become 6%. At 6% interest rate, asset price is 104. Based on his expectation, what does he want to do? Based on his expectation, what will he want to do? Based on his expectation, he will want to do what? Sell or buy? What will he want to do? He will want to buy. अरे अभी 105 का प्राइस है यार. Why will he want to sell? He wants to buy at 105. Later he will get 106. आज उसे 105 रुपए में मिल रहा है. आपको एक चीज आज 105 रुपए में मिल रही है. Right? You have this. You have this. Or let's say you are able to get this at 105. Right?
You have this, or you are able to get this at 105 today. This pen is for 105 rupees today. You know tomorrow it is going to be for 106 rupees. You will buy it ना, कि कल बेच देना. This person will want to buy, or this person will want to hold. Hold means कि अगर इनके पास है, he will say ठीक है, नहीं मैं रखता हूं, मैं नहीं बेचता आपको. मेरे पास ये पेन है, आज ये 105 रुपए का है, मुझे लगता है कल ये पेन 106 रुपए का हो जाएगा. Will I sell it at this value? No. Either you buy, or if you have it already, you don't sell. Right? So either you buy or you hold. What will I do? I have an expectation that asset price will become 104. I have an expectation that asset price will become 104. I have this. आज 105 रुपए का है, मुझे लगता है कल 104 रुपए का हो जाएगा. मैं क्या करूंगा? सेल, बेच दो. I will sell. Right? कि यार 105 तो मिले, कल तो 104 रह जाएगा. और I can say that I will not buy. राइट? यार चलो सिर्फ सेल पे रुक जाते हैं. अब एक बात सोचो, अब ये आज का पहला जादू है. ये आपने लाइफ में बहुत बार देखा है आपके सामने होते हुए, ये सेम चीज, बट आपने कभी ऐसे सोचा नहीं. प्रॉपर्टी की डील्स होती हैं, राइट? प्रॉपर्टी की डील्स होती हैं, पीपल आर सेलिंग एंड बाइंग प्रॉपर्टी. स्टॉक्स की डील्स होती हैं, पीपल आर सेलिंग एंड बाइंग स्टॉक्स. है ना? ये ऐसे एसेट्स हैं जिनका बारे में आपको पता है. लैंड बिकता है. इज एवरी लैंड सेल मेड इन डिस्ट्रेस? एक तो डिस्ट्रेस सेल होती है कि अभी मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी. राइट? एक होता है कि लैंड की सेल की बात करते हैं, लेट्स टॉक ऑफ लैंड सेल्स. एक होता है कि मेरे को अभी जरूरत है पैसे की, आई विल हैव टू इन डिस्ट्रेस सेल माय लैंड. ऐसी लैंड सेल्स तो बहुत कम है. स्टिल अ लॉट ऑफ लैंड सेल्स आर हैपनिंग, प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड एंड बॉट. एक लैंड सेल्स होती हैं जो एंड यूज के लिए होती हैं कि चलो मुझे अपने लिए रहना है. सो इफ आई टॉक ऑफ लैंड सेल्स, देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज डिस्ट्रेस सेल, कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे किसी तरह पैसे चाहिए, आई एम इन एन इमरजेंसी, लेट मी सेल माय लैंड. दूसरी है एंड यूजर सेल. एंड यूजर सेल इज मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैं लैंड खरीद लेता हूं. A lot of third type of land selling is also happening where land is simply an asset. प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी खरीद ली. हर जगह प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना हुआ है. राइट? Why are those people selling or buying? अगर डिस्ट्रेस है तो समझ आता है. अगर डिस्ट्रेस है तो समझ आता है ना, कि यार इमरजेंसी है, बेचनी पड़ेगी, तो समझ आता है. अपने रहने के लिए जानी है तो भी समझ आता है. थर्ड टाइप ऑफ लैंड सेल हो क्यों रही है? थर्ड टाइप ऑफ लैंड सेल तो होनी ही नहीं चाहिए. ना मेरे को इमरजेंसी है, ना मुझे अपने रहने के लिए चाहिए, तो मैं क्यों खरीदूं या मैं क्यों बेचूं? इट इज ओनली हैपनिंग ऑन दिस एक्सपेक्टेशन. आज मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आज ये 1 करोड़ रुपए का है, मुझे लगता है दैट टुमारो इट विल बिकम 90 लाख, तो मैं बेच देता हूं. है ना? मुझे एक्सपेक्टेशन है दैट एसेट प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, तो मैं खरीद लेता हूं. आज मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है फॉर 105 रुपीज. मुझे लगता है कि दिस पीस ऑफ लैंड विल लूज वैल्यू. दिस पीस ऑफ लैंड विल लूज वैल्यू. मुझे ऐसा लगता है कि ये पीस ऑफ लैंड आज 105 रुपए का है, कल 104 का हो जाएगा, तो मैं बेच देता हूं. राइट? यू थिंक ये लैंड 105 रुपए का है, कल 106 का हो जाएगा, तो आप खरीद लेते हो. एंड हाउ इज दिस थिंग डिसाइडेड कि ये 104 का होगा या 106 का होगा? ये कैसे डिसाइड होता है कि 105 का है या 106 का होगा? कैसे पता चलती है ये बात? थ्रू योर एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गिवन टू assumptions. ये चीज was dependent on 2 assumptions. What were the 2 assumptions which we started with in this chapter? First assumption was everyone has perfect information. Second was everyone is a rational actor. ये assumption से हमने स्टार्ट किया था.
परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रैशनल एक्टर्स हो अगर आप, इन्फ्लेशन छोड़ दो यार, इन्फ्लेशन इज नॉट अ डिसीजन फैक्टर यार, ये इंपॉर्टेंट था, राइट? अगर आप अभी भी लोकेशन एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, देन यू नीड टू वॉच टुमारोज लेक्चर अगेन। जो भी उस प्रॉपर्टी की, ये कल भी समझाया था आपको, आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी 108 से 110 रुपए की होने वाली है बिकॉज ऑफ अ हाईवे, वो तो सबको पता है ना, दैट इंफॉर्मेशन इज विद एवरीवन, वो तो इंफॉर्मेशन सबके पास है ना। आप एक, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, बट हमारे मॉडल में तो सबको पता है ना, और सब रैशनल एक्टर्स हैं। कोई ऐसे नहीं प्रॉपर्टी खरीद रहा क्योंकि मुझे खरीदनी है मैं खरीद लेता हूं, nobody is giving this sort of reasoning, everyone is a rational actor। मेन रीजन अब क्या बचा? ओनली इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेशन, माई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, माई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आई नो दैट इंटरेस्ट रेट, I know that interest rate is directly proportional to yield, is inversely proportional to asset price. I am aware of this. Everyone is aware of this. Now the decision is simply your not current interest rate. Current interest rate से कोई लेना देना नहीं है. It is simply on the basis of your expectation of interest rates. The decision to buy or the decision to sell is stemming from your speculation of interest rates. This is the speculative demand of money. Speculative demand of money comes from this. What you think interest rates will be like in the future determine your decision to buy or sell. समझ आई बात? प्रीति, यहां रियल लाइफ की तो कोई बात ही नहीं है। रियल लाइफ में डज एवरीवन हैव इंफॉर्मेशन और इज एवरीवन अ रैशनल एक्टर? नो। इतनी बार बोलने के बाद कि चैट स्पैम मत करो, लोग चैट स्पैम करते हैं, दैट मीन्स एवरीवन इज नॉट अ रैशनल एक्टर। इतनी बार बोलने के बाद कि पुराने लेक्चर्स रिवाइज करो, लोग रिवाइज नहीं करते, दैट मीन्स एवरीवन डज नॉट हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट? नाउ your decision to buy or sell depends on your speculation. ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं। I get an income, ये बात मैंने कल भी लिखी थी। I get an income, some of that income goes to transaction, this is transaction demand of money, some of it goes to surplus. Of this surplus I have to decide how much do I actually keep as money. Some of it I will keep as money, some of it I will convert to assets, है ना? I get some income, I have some transaction needs from that income, I need to transact. This is, let's say, 30,000, this is 1 lakh, this becomes 70,000. Now out of this 70,000 I have to decide how much do I pour into assets and how much do I keep as money. कितने में assets लूं, कितने में पैसे ऐसे ही रखूं. Assuming zero inflation, I will think how much assets should I buy. This decision to buy assets will be based on interest rates, or not interest rates, my future expectation of interest rate.
my future expectation of interest rate will decide whether I do choose to buy this asset. ठीक है? My expectation of interest rates, like I saw, if I expect interest rates will go down, I will buy. If I expect interest rates will go up, I will not buy. So this decision to buy assets here, is dependent on interest rates. Let's say that I think interest rates will go up. If I think interest rates will go up, asset prices will go down. That means I will not buy. I will keep money in this form. मान लो जीरो इन्फ्लेशन है, आई विल कीप मनी इन दिस फॉर्म. आई विल नॉट बाय. जितना पैसा है अभी रख लेते हैं, ठीक है, अभी रुक जाते हैं. इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप, दैट मींस एसेट प्राइसेस विल गो डाउन, राइट. आज 105 का है तो कल 104 का होने वाला है. आई विल नॉट बाय, आई विल जस्ट कीप इट लाइक दिस. आई विल नॉट बाय, राइट. This money that I decide to keep as money and not put into assets, the amount of money that I decide to keep like this and not put here, how am I making this decision? ये decision मैं कैसे ले रहा हूं? On the basis of my speculation of interest rates. It is my expectation that interest rates will, it is my expectations that interest rate will go up. That is why I am choosing not to buy. So this money, this surplus money is simply kept as money because of my speculation of interest rates, otherwise known as speculative demand for money. If I would have converted to asset, तो मनी नहीं बचता ना, कैश तो चला जाता, सिर्फ एसेट रह जाता मेरे पास. I have decided to keep cash as cash because of my speculation of interest rates, known as speculative demand for money. So demand for money, हम क्या पढ़ रहे थे? मनी में हमने पढ़ा वाई मनी, आज हमने पढ़ा मनी डिमांड. मनी डिमांड में हमने दो चीजें पढ़नी थी, स्पेक्युलेटिव डिमांड एंड ट्रांजैक्शन डिमांड. दो तरह की डिमांड है, एक है ट्रांजैक्शन डिमांड, एक है स्पेक्युलेटिव डिमांड. स्पेक्युलेटिव डिमांड इज हियर. Speculative demand is here. How much money I choose to keep as money. This is speculative demand. How is this a demand? इसमें क्या doubt है? I am demanding that I will keep this money as money. Otherwise, I would have converted it to asset. I would have converted this money to asset. I would not have been left with any money. मेरे को 1 लाख रुपीस कैश मिल रहा है. I say that I want to keep 70,000 of this as cash, as money. Why? Because I don't want to buy assets. नहीं तो everyone will buy an asset, not keep this the way it is. So this demand is speculative demand for money. This is transaction demand for money. Now, let's understand a logic. Interest rate in the economy, as per me, today is interest rate in the economy as per, ये इसके बाद ब्रेक लेना, इसके बाद ब्रेक पक्का. Interest rate as per me today is high. That means what is my future expectation? आपने बताने हैं अब ये सारे आंसर्स. Future expectation of interest rate is that it will be, okay, I'll wait.
I'll wait for. Okay. So future expectation of interest rates will be low. Good. ठीक है. Now, from this, future expectation of asset price will be high or low. What is my future expectation of asset price? High. Today it is for 105. Tomorrow it will be for 106. Based on this, what is my decision with respect to asset? Sell or buy? अब इसका दिमाग से जवाब देना प्लीज, गलत मत देना. अरे सेल कैसे बोल रहा है कोई यार इस पे? जॉयता दास, आप चैट थोड़ा कम स्पैम करके, इफ यू थिंक यू विल गिव राइट आंसर. नो, 3-4 बार आपने गलत आंसर दिया आज. दिस इज नॉट ओके. आज ये चीज 105 की है, मुझे लगता है कल 106 की हो जाएगी, तो आज खरीद लूंगा ना मैं, ताकि मैं कल बेच सकूं. डिसीजन इज टू बाय. इफ आई चूज टू बाय एसेट्स, what happens to speculative demand of money? What happens to speculative demand? Reduces. Speculative demand will reduce. So, अब revisit. Today interest rate is high as per me. Today interest rate is high as per me. My speculative demand will go down. Today interest rate is high as per me. My asset buying will go up. My speculative demand will reduce. The speculative demand of money, MD speculative, is inversely proportional to my idea of interest rate. And this is today's interest rate. ये आज का interest rate है. This is current interest rate. Current interest rate was high. Speculative demand became low. समझ आई बात? Current interest rate was high. Speculative demand became low. अब दिस इज ऑल्सो इंटुइटिव. ये चीज आप लॉजिकली भी सोच सकते हो. ये मैंने आपको क्यों राम कथा समझाई है, मैं आपको बताता हूं. मेरी 1 लाख रुपीस की इनकम है, 30,000 मैंने खर्च कर दिए, 70,000 मेरे पास हैं. मुझे पता है मैं कहीं भी डालूंगा तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. विल आई कीप दिस एज कैश? मैं रखूंगा क्या 70,000 एज कैश? नहीं रखूंगा ना. मैं कहूंगा यार डालो बैंक में, डालो बॉन्ड में. और यहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट 1% मिल रहा हुआ तो मैं कहूंगा क्या फायदा यार, रख ही लेते हैं कैश, अभी तो रख लेते हैं. Speculative demand of money is inversely proportional to current interest rate. Right?
लेकिन ये जो आप डिसीजन एक्चुअली लेते हो, इसके पीछे बहुत लॉजिक है ना? समझ आई बात आपको? स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, कितना ऑफ दिस मनी आई एक्चुअली वांट टू कीप एज मनी, हाउ मच ऑफ दिस मनी आई एक्चुअली वांट टू कीप एज मनी, keep as money, that depends on interest rates today. That is speculative demand. जो मेरा यहां जाना है उसको तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता. This I can control. This is my decision. This depends on interest rate today. Money demand for transaction into velocity of money was equal to price level into output, which was real. Money demand for speculation is proportional to 1 by interest rate. Total money demand is equal to money demand for transaction plus money demand for speculation. I can say that money demanded for transactions is proportional to GDP levels. Money demanded for speculation is proportional to 1 by interest rate. Please write this and you can take a break of 3 minutes. Please write this. We have derived these equations. Please write this. नमन फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपके नोट्स में. अभी हैंड रिटन नोट्स में जितनी बातें बोर्ड पे लिखी हैं सारी लिखी हुई हैं. ये करंट इंटरेस्ट रेट है. दिस इज नॉट योर स्पेकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. दिस इज करंट इंटरेस्ट रेट. स्नेहल ऑलरेडी अपलोडेड है. अरे अभी तो आप रियल लाइफ जादू दिखाऊंगा आपको. 2 मिनट रुक जाओ बस. नेक्स्ट 20 मिनट्स यू आर गोइंग टू सी रियल लाइफ जादू.
मेंस का क्वेश्चन दिखा के जादू नहीं बोलूंगा, रियल लाइफ जादू दिखाऊंगा। चलो, ये बात क्लियर है। अब अगर मुझे इसको, इफ आई हैव टू राइट दिस इक्वेशन एंड चेंज दिस प्रोपोर्शनल साइन टू इक्वल टू साइन, व्हाट डू आई नीड टू डू? अगर मुझे इसको एमडीटी प्रोपोर्शनल टू जीडीपी को इक्वल टू बनाना है, एमडीटी प्रोपोर्शनल टू जीडीपी को इक्वल टू जीडीपी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू करके कांस्टेंट, तो आई कैन राइट money demand of transaction is equal to some constant into GDP levels. Money demand of speculation is equal to some constant by rate of interest. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने अभी क्या नहीं देखा है? हमने अभी नहीं देखा है मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं देखा है हमने, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हियर इज आर मैक्स माइनस आर डिपेंडेंट ऑन डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिनिमम। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। ये फॉर्मूला समझना जरूरी नहीं है, बस इसकी भावना समझना जरूरी है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया है क्लास 12th की, इसकी भावना समझना जरूरी है। व्हाट इज आर मैक्स हियर? आर मैक्स इज दैट लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट where everyone thinks it will fall. R max is that rate of interest where everyone thinks that this rate of interest is going to fall. इसका कोई नंबर नहीं है, ये बस एक थिंकिंग है, राइट? जैसे कि लेट से हम जितने लोग यहां पर हैं, सबको लगता है कि अगर सेविंग्स इंटरेस्ट रेट 20% हो गया इकोनॉमी में, तो अब तो गिरेगा ही गिरेगा। 20% बहुत ज्यादा है, राइट? आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री। समबडी विल से नहीं 25, तो चलो 25 हो गया। R max is that level of rate of interest where everyone, all of us think that it will fall. R minimum देख लेते हैं। R minimum देख लेते हैं। R minimum is that level of rate of interest where everyone thinks it will rise. Let's say सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट रेट 1% पे आ गया है। अब हम सब सोचेंगे कि यार ये तो बढ़ेगा ही, ये बहुत कम है, राइट? R max here is that level of rate of interest where everyone thinks it will fall. R min is that level of rate of interest where everyone thinks it will rise. Let's say we come to an agreement, the two of us, we come to an agreement that this value is 20%. कि जब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, हम सबको लगेगा कि गिरेगा। और यहां पर थिंक्स वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? Because this is speculative demand, depends on your thinking and speculation only. आपकी थिंकिंग और स्पेकुलेशन पे ही डिपेंड करता है ये हम मान लेते हैं 1% है, ठीक है? अब नाउ लेट्स से इंटरेस्ट रेट, एंड यहां पर जस्ट टू कीप यू नो अवेयर, आर इज करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इस टाइम पे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जिससे हमने उल्टी प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर बनाई थी? ये जो हमने बनाया था करंट एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो है कि मैं कहां तक पहुंच जाएगा, द लेवल दैट आई थिंक व्हेन इट रीचेस दिस लेवल देन इट विल फॉल, इफ इट रीचेस दिस लेवल देन इट विल राइज। अभी का एक्चुअल लेवल इज दिस स्मॉल आर, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि ये लॉजिक यहां पर फॉलो हो रहा है या नहीं। इफ स्मॉल आर इंक्रीजेस in this equation, this is fixed,
This is fixed at 20, this is fixed at 1. If R increases, the numerator becomes smaller, the denominator becomes bigger, the value of money demand for speculative purpose will become smaller. तो ये लॉजिक अभी भी लग रहा है, देख लो इसको एक बार ध्यान से. आई नो थोड़ा सा मैथ्स हो रहा है तो दिक्कत होगी, बट दिस इज द लास्ट लॉजिकल मैथ्स थिंग वी हैव टू रीड टुडे. आर मैक्स इज दैट वैल्यू जिसपे हम सबको लगता है दैट इंटरेस्ट रेट विल फॉल. दिस वैल्यू इज 20. आर मिनिमम इज दैट वैल्यू जहां हम सबको लगता है दैट इट विल राइज, दैट इज 1. 20 माइनस आर डिवाइड बाय 1 माइनस 1 और आर माइनस 1. तो हमने इसके थ्रू अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं, दिस फॉर्मूला बिकम्स मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस 20 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. ठीक है. अब जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो गया 10, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो गया 10, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इक्वल टू 10 बाय 9. अगर आर हो गया 5, तो एक वैल्यू कितनी हो गई? इन केस ऑफ आर इक्वल टू 5, दिस वैल्यू बिकम्स 20 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 इक्वल टू 15 बाय 4. तो ये जो लॉजिक हमने बना रखा है, ये दिस कंटिन्यूज टू स्टे द सेम. है ना? जब आर ज्यादा था तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.1, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4. आर ज्यादा था तो एमडीएस कम हो गया, आर कम था एमडीएस बढ़ गया. तो ये लॉजिक जो हमने ऊपर लिखा था वो एज इट इज है, बस ये इक्वेशन लिखने का तरीका है. ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है, इक्वेशन एक बार दोबारा लिखते हैं. अब इसका ग्राफ बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड इज आर मैक्स माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिनिमम. Let's put this on a graph. When R is equal to R maximum, when R is equal to R maximum, what is the value of MDS? When R is equal to R maximum, MDS की क्या वैल्यू है? गलत नहीं बोलेगा कोई? 0. So this is rate of interest, or which is price of money. This is quantity. यही ग्राफ बना रहे हैं हम पहले दिन से, प्राइस क्वांटिटी ग्राफ. Price of money is simply known as rate of interest. Quantity is speculative money demand. यहां पे हम देख रहे हैं. When rate of interest is R max, then quantity demanded for speculative purpose is 0. अब second case, this is case 1. Case 2, when R is equal to R minimum, then what is the quantity demanded? और छोड़ो what is the MDS now? When R is equal to R minimum, what is the value now? It is infinite. तो जब ये R minimum पे है, when it is at R minimum, it is infinite. तो graph will be something like this. इस टाइप का ग्राफ बनेगा. This type of graph will be made. This is the speculative demand of money का ग्राफ. ठीक है. अभी हमें क्या करना है, हमें इसे मनी सप्लाई के ग्राफ से लाना है. Money demanded is equal to, total money demanded is equal to money demanded for transaction purpose and money demanded for speculative purpose. Money demanded for transaction purpose is proportional to GDP.
I can say it is proportional to or equal to some constant into GDP. Money demanded for speculative purpose is proportional to 1 by rate of interest. I can say that MDS is equal to some constant divided by rate of interest. हम वैसे पूरी वैल्यू देख चुके हैं, but let's look at like this, right? So total money demanded is some constant into GDP. This is money demanded for transactions plus some constant, let's say B, या constant, let's say C, divided by rate of interest. This is money demanded for speculative purpose. है ना? Let's assume that GDP is constant. The graph that we will make for total money demand is at a particular level of GDP. At this level of GDP, what is money demand? At this level of GDP, what is money demand? उसका हम ग्राफ बनाएंगे. If GDP is also constant, total money demanded becomes complete constant plus constant by rate of interest. ठीक है? This becomes the value. Only variable that is changing is this. सिर्फ यही वेरिएबल चेंज हो रहा है. इस वेरिएबल का ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो टोटल मनी डिमांडेड का जो ग्राफ बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा. एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ जीडीपी इट विल लुक लाइक दिस. एट सम लेवल ऑफ जीडीपी इट विल लुक लाइक दिस. दिस इज टोटल मनी डिमांडेड. अगर नहीं समझ आ रहा है ग्राफ, इवन देन इट्स ओके, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट द ग्राफ इज मेड लाइक दिस. इससे ज्यादा इक्वेशन लिखने को आपको कोई नहीं बोलेगा. मैं आपको भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बट इवन इफ दिस इज नॉट समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, इट्स ओके. टोटल मनी डिमांडेड का ग्राफ विल लुक लाइक दिस. इफ जीडीपी इंक्रीजेस, दिस इज एट लेट्स से y1 लेवल ऑफ जीडीपी. If GDP increases, what happens to this graph? जो हमने आज तक सारे ग्राफ्स में किया है, shifting of variable. GDP increases, what happens to this graph? आज तक हमने सारे ग्राफ में यही काम किया है. It will shift outward. GDP increases, this will start looking like this at y2 level. Simple, same. So the graph for total money demanded, हम मनी का डिमांड ग्राफ बना रहे हैं. डिमांड ग्राफ में क्या लिखा जाता है? What is written on a demand graph? Here we write price, here we write quantity. है ना? What is the price of money? Interest rates. है ना? What is quantity? Simply money demanded. Quantity of money demanded, that's what we are seeing. Total money demanded का ग्राफ बनता है ऐसा. At a particular level of GDP. This is at particular level of GDP. ठीक है? ये बात हमने समझी, ये बात हमने समझी. अब इसके साथ हमने क्या लॉजिक समझा? That interest rates are directly proportional to yield, are directly proportional to or are proportional to 1 by asset price, are proportional to 1 by
प्रीमियम, ये भी हमने समझ लिया है ना। अभी तक हमने दोनों चीजें समझी है ना। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। इतनी राम कथा का कोई लॉजिक नहीं है अगर आप ये दोनों चीजें अब्सॉर्ब कर सकते हो। अल्टीमेट आउटकम फ्रॉम टुडेज क्लास सो फार इज ओनली दिस। इतनी ही आउटकम है आज की क्लास की अभी तक। अब देखो पहला जादू, लेट्स सी द फर्स्ट जादू। रीड दिस। अब देखो क्या लिखा है यहां पे, यूएस फेड मीटिंग लाइव। फेड क्या है? यूएसए का सेंट्रल बैंक। यूएसए का सेंट्रल बैंक है ना, ठीक है, ये यूएसए का सेंट्रल बैंक है। क्या लिखा है? यूएसए सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड टू कट रेट्स अगेन। मतलब कैसे करता है ये हम कल देखेंगे, बट यूएसए का सेंट्रल बैंक वाज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। यूएसए का सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, है ना, यही लिखा है इस आर्टिकल में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। यूएसए सेंट्रल बैंक is expected, there is an expectation that interest rates will go down, interest rates will be cut. This leads to the expectation that asset prices are going to go up in USA. Asset prices in USA are going to go up, है ना, यहां तक क्लियर? What is the decision I will take? आज जो चीज 100 रुपए की है वो कल 110 रुपए की हो जाएगी, आज ही खरीद लो। आई विल बाय एसेट्स इन यूएसए। I will buy assets in USA. Buy assets in USA means what? Buy assets in USA means what? Asset क्या क्या है ये? Stock, land, government bonds, बहुत सारी चीजें हैं, यही सारे assets थे, है ना। तो I want to now, my decision looking at this is my decision. I want to buy stocks in the US, है ना, ये डिसीजन है। Let's say there is a huge or a big billionaire, someone who has lots of money. This person has invested money. This person has invested money all over the world. पूरी दुनिया में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। इन्होंने देखा यूएस में तो एसेट प्राइसेस बढ़ रहे हैं। The ideal decision right now is to buy assets in the USA. This person has also invested money in India. इन्होंने इंडिया में भी एसेट खरीद रखे हैं, हर जगह खरीद रखे हैं। He has bought assets all across the globe. ठीक है, इंडिया में भी एसेट्स हैं और यहां पर भी एसेट्स हैं, राइट। उसने देखा कि यार यहां तो क्या है एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन हियर, दैट
इंटरेस्ट रेट विल फॉल, एसेट प्राइसेस विल इंक्रीज। उसने कहा भाई आरबीआई की एक्सपेक्टेशन बताना जरा मुझे एक बार कि आरबीआई में क्या चल रहा है। In its last meeting, RBI decided to keep interest rates unchanged. That means asset prices here will stay the same. है ना? So for now, think from his perspective. In India, asset prices will stay the same. In USA, asset prices will increase. तो मैं क्या करूं? I will put whatever money I have here. यहां से पैसा निकालता हूं और इधर डाल देता हूं, यहां से 100 रुपए निकाल के इधर लगा देता हूं। Withdraw from India, sell to and buy in USA. Withdraw from India, buy in USA. है ना? ये भी क्लियर है। ये वाले पैसे निकालो, ये 100 रुपए की चीज है, 100 की ही रहेगी। यहां 100 रुपए की चीज मिल रही है, 105 की होने वाली है। ये चीज क्लियर है। विड्रॉ फ्रॉम हियर, सेल हियर। ठीक है। अब once he withdraws money from here, let's say all of the assets he had here were stocks. Once he withdraws money from here, he starts selling his assets. What happens to Indian stock market? ये सारे स्टॉक बेचना शुरू कर देता है। स्टॉक मार्केट को क्या होगा? अप और डाउन। स्टॉक मार्केट गोज अप व्हेन एवरीवन वांट्स टू बाय, स्टॉक मार्केट गोज डाउन व्हेन एवरीवन वांट्स टू सेल। स्टॉक मार्केट शुड गो डाउन, है ना? सो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन, simply on the basis of this expectation, Indian stock market should go down. Simply on the basis of this expectation, Indian market should start to fall. .5% fall. 1.5% fall in 1 week. है ना? I told you if you were to absorb the information of this class, you will become a better investor. I told you you will become a better investor if you understand this class properly. ठीक है, चलो। नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा डिमांड ऑफ मनी। वी हैव रेड ऑल ऑफ दिस, डिमांड ऑफ मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पेकुलेटिव डिमांड, ये सारी बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इंटरेस्ट रेट्स एंड देयर रिलेशन विद एसेट प्राइस, यील्ड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड इज आल्सो आई हैव रेड। स्पेकुलेटिव डिमांड का ग्राफ बना के टोटल डिमांड ऑफ मनी, आई हैव कम टू दिस ग्राफ, and GDP increases, graph will shift like this also I will read. ठीक है, यहां तक मैं पहुंचा हूं। Now I will come to money supply. हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? मनी।
द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी। क्या पढ़ना था? वाई मनी पढ़ लिया, वाई मनी पढ़ लिया। देन क्या पढ़ना था? देन क्या पढ़ना था? डिमांड ऑफ मनी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी पढ़ते हैं, लॉजिकली चल रहे हैं। जैसे सप्लाई, जैसे डिमांड कर्व बनाया मनी का, ऐसे इसका सप्लाई कर्व बना देते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी भी हो जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी पे आते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? Law of supply was quantity supplied will be proportional to price at ceteris paribus. Quantity supplied is proportional to price at ceteris paribus. है ना? Now, the problem here was, or this logic was applied by, because suppliers wanted to maximize profit. Suppliers wanted to maximize profit. That is why this logic was true. है ना? But who is supplying money in the economy? Who is the supplier of currency? It is the central bank. Supplier of currency is central bank, not government. It cannot be government. हम देख चुके हैं कि गवर्नमेंट नहीं सप्लाई कर सकता मनी। हम देख चुके हैं सेंट्रल बैंक की नेसेसिटी। सेंट्रल बैंक इज द सप्लायर। सेंट्रल बैंक इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल बैंक, आरबीआई डज नॉट वांट टू मेक प्रॉफिट। आरबीआई इज नॉट इन द इकोनॉमी ताकि वो प्रॉफिट बढ़ा सके, है ना? Central bank is there in the economy to supply money, but it does not care about profit. On the other hand, central bank decides money supply in the economy irrespective of price. मनी का कुछ भी प्राइस चल रहा हो, कुछ भी इंटरेस्ट रेट चल रहा हो, आरबीआई डिसाइड्स द मनी सप्लाई। हाउ डज इट डिसाइड द मनी सप्लाई? हमने क्या देखा था? अभी हमने डिमांड ऑफ मनी देखी है। याद करो पुराना ऑफ वाई मनी। क्यों और कैसे डिसाइड करेगा आरबीआई मनी सप्लाई? आरबीआई को दो तीन चीजें इंश्योर करनी है। पहला, कि ट्रांजैक्शंस होती रहें। दूसरा, कि ग्रोथ होती रहे। याद है, तभी तो हम आरबीआई तक पहुंचे थे कि ग्रोथ होती रहे। तीसरा, कि प्राइस लेवल्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड। प्राइस लेवल्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, है ना? अल्टीमेटली व्हाई इज आरबीआई डूइंग दीज थ्री थिंग्स? अल्टीमेट रीजन क्या है? मेटा रीजन क्या है? अल्टीमेट रीजन क्या है? अल्टीमेट रीजन क्या है? अल्टीमेट रीजन है सो दैट पीपल will continue to believe in the currency, because today currency, it's not growth. Today currency is merely your and my belief. आप बिलीव करते हो उसकी वैल्यू है, मैं बिलीव करता हूं इसकी वैल्यू है। योर कॉन्फिडेंस, वैल्यू कैसे इन्फोर्स हो रही है? थ्रू फिएट। एक्सेप्टेबिलिटी कैसे इन्फोर्स हो रही है? थ्रू लीगल टेंडर। You must keep believing in these things. You must keep trusting these things. Only then this currency has value. Till you trust that this piece of paper has value, only then it has value. And this piece of paper having value, this
is fairly and only dependent on your trust, and your trust will be there only when transactions will keep happening, growth will keep happening, price levels are maintained. है ना? आप तभी ट्रस्ट करोगे ना जब सब कुछ ठीक चलता रहेगा. द मोमेंट समथिंग गोस रॉन्ग, जैसे मैंने आपको जर्मनी का केस बताया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने जो स्टेटमेंट दी थी, राइट, कि सिगरेट से एक्सचेंज हो रहा है बिकॉज पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग, बिकॉज ग्रोथ वाज नॉट हैपनिंग, प्राइस लेवल्स वर नॉट मेंटेन्ड. सो आरबीआई इज डिसाइडिंग द मनी सप्लाई बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स. प्राइस लेवल है ये एवरेज प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, प्राइस ऑफ मनी नहीं है. So when RBI decides how much money supply should be there, it does not care about these factors. So the price elasticity of supply, how much is the money supply responsive to price of money, how much is the money supply responsive to interest rates, which are the price of money, is zero. आरबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस ऑफ मनी क्या है. आरबीआई डज नॉट केयर अबाउट व्हाट इज द प्राइस ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. आरबीआई डज नॉट केयर व्हाट इज द प्राइस ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. है ना? उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ये चीजें मेंटेन करनी है. रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो. यार ये तो हम पढ़ चुके हैं, चलो छोड़ो, अब रिवाइज नहीं किया होगा आई एम श्योर. ठीक है. आरबीआई डज नॉट केयर व्हाट इज द प्राइस ऑफ मनी सिंस आरबीआई इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. आरबीआई डिसाइड्स मनी सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस. चाहे कुछ भी प्राइस हो, प्राइस से लेना देना नहीं है. प्राइस ऑफ मनी इज इंटरेस्ट रेट्स. आरबीआई डिसाइड्स मनी सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए, दिस इज प्राइस ऑफ मनी मीनिंग इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, आरबीआई को इससे लेना देना नहीं है. आरबीआई इंटरेस्ट रेट देख के डिसाइड नहीं करता कि कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए. आरबीआई और चीजें देखता है. आरबीआई इज कंसिडरिंग कंप्लीटली डिफरेंट फैक्टर्स. इट इज नॉट कंसिडरिंग these factors. So how will the graph of money supply look like? What will the graph of money supply look like? I write price of money. Price of money is interest rate. Here I write quantity of money. How will the graph of money supply look like? Quantity has nothing to do with price. It will look like this. प्राइस कितना भी होता जाए, ये क्वांटिटी शिफ्ट इसके बेसिस पे नहीं हो रही है. परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली नॉन रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस. है ना? अब बनाते हैं मनी का डिमांड सप्लाई ग्राफ. मनी, द मार्केट ऑफ मनी. प्राइस ऑफ मनी इक्वल टू इंटरेस्ट रेट्स. क्वांटिटी ऑफ मनी मनी डिमांडेड, money supplied. This is equilibrium level. This will become interest rate or general interest rate in the economy. This will become money supply equal to money demand equal to amount of money in the economy, quantity of money in the economy. फॉर सिंप्लिसिटी, इस हरी लाइन को फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम सिर्फ इतना पोर्शन देखते हैं, ये वाला, बिकॉज जनरली इसी के बीच में रहता है इंटरेस्ट रेट.
सो फॉर सिंप्लिसिटी वी मेक इट लाइक दिस, दिखता ही ऐसा है, सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसा बनाते हैं. तो नाउ इफ वी मेक अ सिंपल ग्राफ ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, this is interest rate, this is quantity of money, this is money demand or demand for money, this is money supplied, this is the interest rate in the economy, this is the quantity of money in the economy. ये समझ आया? आरबीआई यहां तक समझ आया? दिस इज क्लियर? इसमें कुछ डाउट होना नहीं चाहिए यार आपको, हमने बहुत आराम से ड्राइव किया है इसको. है ना? अब लेट्स से हु कंट्रोल्स मनी सप्लाई, हु कंट्रोल्स मनी सप्लाई, जवाब दो, दो तीन मेरे. अब हु कंट्रोल्स द मनी सप्लाई in the economy, who controls money supply? RBI. RBI chooses to increase the money supply. RBI chooses to increase the money supply. What happens to this graph? ये रेड लाइन को क्या होगा? What happens to this red line? दूसरा जादू है आज का, पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी अभी अगले 10 मिनट में. This red line will move outward. What happens to the interest rate? Interest rate goes down. Interest rate goes down. Clear? Clear? So with me so far? Interest rate affects एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या देखा था? इंटरेस्ट रेट वॉज अ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इंटरेस्ट रेट वॉज अ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. इस पे कोई इफेक्ट नहीं था, इस पे इफेक्ट बाद में देखेंगे. बट वी नो इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स दिस. सी एंड आई बोथ रिमेंबर, इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड. यस और नो? Interest rate goes down, money is available cheaply, consumption will go up or down? Up. Investment will go up or down? Up. है ना? So I can write as interest rate has fallen, our aggregate demand goes up. अरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के डिटर्मिनेंट्स में नहीं है ना अभी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे हम नहीं आए अभी. वी हैव नॉट कम टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग येट. फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ा ना अभी. अब लेट्स मेक वन मोर ग्राफ. एग्रीगेट डिमांड, aggregate supply. As soon as this happens, what happens to this graph? ये होते ही यहां क्या हुआ? ये होते ही यहां क्या हुआ? आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड हुआ ना, आउटवर्ड शिफ्ट.
price level equilibrium, price level 1. Y equilibrium, Y1. What happens to price level? ये करते ही what happens to price level in the economy? Price level increases, leads to inflation. RBI increases money supply, leads to increasing price level, leads to increasing growth. प्राइस लेवल बढ़ने को कहते हैं इन्फ्लेशन. अब याद करो, इंडियन एक्सप्रेस में कई बार दिखाया आपको टर्म इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ. इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ इज देयर, एंड इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ सब कह रहे थे आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आरबीआई मनी सप्लाई कम कर दे, आरबीआई रिड्यूसेस मनी सप्लाई, then aggregate demand will fall. Aggregate demand will fall, price levels will fall, inflation will stop, inflation will be controlled. This is how RBI controls inflation in the economy. This is RBI's mechanism of controlling inflation. इस चीज पे जिसने आप में से आज तक प्रीलिम्स दिया है, इस चीज पे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, एंड लोग बस रट रहे हैं इसको. आई नो इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू गेट हियर, बट आई डोंट थिंक you will ever need to mug this up now. I don't think you will ever need to mug this up now. अब सारे इक्वेशंस हमारे ग्राफ में हैं. Everything is on the graph now. Interest rate, price levels, GDP, unemployment, money supply is now on two graphs. है ना? अब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना? अल्टीमेटली आपको बस इतना याद करना था. ये याद कराने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, बट नाउ यू विल नॉट फॉरगेट इट. अब कुछ ही करा लो, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा. नाउ इट इज नो लॉन्गर समथिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट. गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, अब सब करा लो यहीं पे. है ना? आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इंटरेस्ट रेट पे भी जा सकता हूं, इधर से भी इधर आ सकता हूं, बिकॉज दिस इज एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ जीडीपी. अब मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग करा के पहले एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट कराऊं. जब एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ये ग्राफ बाहर की तरफ जाएगा, ये ग्राफ बाहर की तरफ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. किसी ने आप में से किसी ने, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस नाउ, किसी ने आप में से क्राउडिंग आउट इफेक्ट सुना है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट. एनीवन ऑफ यू हैज हर्ड दिस टर्म, क्राउडिंग आउट इफेक्ट? कि कईयों ने सुना होगा और रट लिया होगा कि यही तो करना होता है इकोनॉमी में. क्राउडिंग आउट इफेक्ट मींस, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं इन ग्राफ्स को यूज कैसे करना है. क्राउडिंग आउट इफेक्ट मींस, आपने कईयों ने सुना होगा
that if government starts borrowing, if government starts borrowing, गवर्नमेंट एकदम से बोरो करने लग जाए फ्रॉम बैंक्स, गवर्नमेंट को कहे मुझे बहुत ज्यादा स्पेंड करना है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड करेगी तो इट स्टार्ट्स बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, दिस लीड्स टू बैंक्स lending majorly to the government and not having enough money, they don't have enough money to then lend to private investors. सिंपल सी बात है कि बैंक के पास एक लिमिटेड अमाउंट है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस एक लॉजिक बता रहा हूं, बैंक के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, बैंक किसी को भी दे सकता है, गवर्नमेंट कहती है हमें दे दो, बैंक गवर्नमेंट को देके खुश है क्योंकि गवर्नमेंट को रीपे करने का चांस बहुत हाई है, तो मेरे लिए अब पैसा लेना मुश्किल हो गया. नाउ रिप्रेजेंट दिस, दिस इज हाउ यू मग दीज थिंग्स अप, क्राउड आउट होगा या क्राउड इन होगा, पीएसएल तो नहीं लग जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ रिप्रेजेंट दिस ऑन अ ग्राफ. तो क्या ही है, गवर्नमेंट वांट्स टू बोरो मोर सो दैट इट कैन स्पेंड मोर. Government wants to borrow more so that it can spend more, right? Government borrows more, government will spend more, government spending will increase, then aggregate demand will increase, aggregate demand will get here, price level goes up, GDP goes up, GDP goes up. Now let's look at demand and supply of money. Money supply is fixed. This is demand of money. This is demand of money at earlier GDP. Now demand of money will increase as GDP has become Y1. Demand money curve will shift outside because of government borrowing and spending. Interest rate in the economy has increased. Interest rate has increased, meaning money has become more expensive. Money has become more expensive means for private people now it is more difficult to borrow. Private people have been crowded out because of government's expenditure through borrowing. This is crowding out effect. हम पढ़ेंगे इसको फिस्कल पॉलिसी में डिटेल में, बट द पॉइंट इज इसको भी लोग रट रहे हैं. एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस. जिसने सुना होगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट उसे समझ आ गया होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो. नाउ एक काम करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस दैट हैव कम फ्रॉम दिस टॉपिक. अब हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस टॉपिक. आंसर नहीं देखेंगे, आंसर एक ही बार में देखेंगे जब सारा कुछ पढ़ लेंगे. लेट्स लुक एट दिस. शुरू से स्टार्ट करते हैं. लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस. ठीक है, आपने आंसर नहीं देना है, आपने आंसर नहीं देना है. यू डोंट हैव टू गिव. उदिता यार एक ही बात, कल टुमारो कल टुमारो क्यों यार, मतलब आप कल देख लेना. आपने आंसर नहीं देना है, आपने यू जस्ट हैव टू लुक एट दिस. डिजिटल रुपी पे क्वेश्चन है. क्या है ये? डिजिटल करेंसी. दिस इज समथिंग वी आर येट टू सी. डिजिटल करेंसी इज समथिंग वी आर येट टू सी. यहां देखते हैं अगेन डिजिटल करेंसी, अगेन समथिंग वी आर येट टू सी. लुक एट दिस क्वेश्चन. लीगल टेंडर मनी, वी हैव सीन दिस टर्म. क्वेश्चन नहीं देख रहे हम. लीगल टेंडर मनी,
reference to digital payments. Again, digital currency, we are yet to see this thing. Again, something related to legal tender. Something related to legal tender now. Now term core banking solutions. Merchant discount rate. ATMs in India. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इससे मुझे क्या पता चल रहा है? मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं दैट बैंकिंग एंड मनी गेट्स आस्क्ड टुगेदर. मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ मनी. मनी डिमांड एंड मनी मल्टीप्लायर. नैरो मनी. मनी सप्लाई एज मोस्ट वाइडली यूज्ड. हाउ डू वी मेजर एक्चुअल मनी सप्लाई? ये वो उसका क्वेश्चन है. फंक्शन ऑफ मनी. This is related to cryptocurrency, Ethereum, Solana, etc. Payments Corporation of India. For anything to be recognized at money, what values it needs to have? ये भी हम देख चुके हैं. UPI से क्या होगा? Aggregate money supply in the economy. Deposits with the banks and currency. So the logic here is that supply of money and demand of money and banking. ये सिर्फ 20 क्वेश्चन है. अगर मैं इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन जोड़ दूं तो 85 क्वेश्चंस इन टोटल आर देयर. 85 in 10 years. That means 8 to 9 questions per year are there. अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग इसमें जोड़ दूं, this figure will go up to 85. Now our target will be that by the end of this week we will finish all of money, banking and money supply, all of it, monetary policy, all of it, by the end of this week. Once we finish this, then I will take one session on Sunday. Sunday को एक आपको क्लास में आना पड़ेगा. We will solve every single MCQ together. आपका टेस्ट की जगह I'll take the session, I'll stand here and take the session. We'll have the test also. ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट से I'm shying away. I'll upload the test also. I will stand here and I will take one session with you. And we will solve every single question that has appeared together. अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको रिवाइज करना है रेगुलरली. You have to revise regularly. ठीक है? Now this week we will have one class on Thursday at 4:30. We have a class on Friday and we have a class on Saturday. Friday's class I will have to take at 11 AM. थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं. अगर कोई किसी भी क्लास से आपका अगर शेड्यूल मैच वो हो रहा होगा तो वो मैं ठीक करा दूंगा. आई एम नॉट हेयर फ्राइडे इवनिंग एंड आई डोंट वांट कि क्लास मिस हो. फ्राइडे की क्लास एट 11 AM, सैटरडे बैक एट 4:30, सेम एज बिफोर. ठीक है? द टारगेट विल बी टू कंप्लीट नाउ मनी एंड बैंकिंग, बिकॉज हमने अब ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली हैं. नाउ देर इज नॉट अ लॉट that is left in money and banking that we are left to do with. ठीक है? हमने लॉजिक सारा समझ लिया है, अब हमें फैक्ट्स पढ़ने हैं. संडे का टाइम मैं आपको बता दूंगा. So 10 AM probably 11 I'll tell you. इसी संडे करेंगे, I'll tell you. But now in the next 3 classes we are going to cover this logic. Your job now is to do proper revision. Your other job now, जो आपको आइडली खुद से कर लेनी चाहिए थी, but I am sure most of you would not have done. पहले के नोट्स में ये चीज अपलोडेड है. What are supply side policies and what are demand side policies? हम हमेशा एग्रीगेट डिमांड को ही क्यों कंसिडर करते हैं जब हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है? हम एग्रीगेट सप्लाई पे क्यों नहीं जाते? This logic is given here. This is already in your notes, right? Please read this and come. Please read this and come. ठीक है?
अब हम कल मिलेंगे 4:30 बजे. Tomorrow when we meet at 4:30, I will expect that you have revised things. In the next 3 classes, things are going to go a little bit faster. If you have this revision, अगर आप ये रिविजन करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. You will understand every single thing that I say to you if you have done this revision. Simply because कुछ बहुत ज्यादा है ही नहीं. अब हमने जब ग्राफ सारे बना लिए तो कुछ बहुत ज्यादा रह ही नहीं गया. Right? It is merely with regards to measurement of money. हम पढ़ेंगे M0, M1, M2, M3, M4, उस पे क्वेश्चंस आए हुए. Then once we measure money, we will go on to banking. We will then go on to banking. ये आपके हैंड रिटन नोट्स में ऑलरेडी है. Then we will go on to banking. Banking हम 2 क्लास में पढ़ लेंगे. मैं अब एक्सपेक्ट करूंगा कि फैक्ट्स आप खुद से पढ़ो. Right? I am assuming that facts now you can read by yourself. Logic I am here to tell you. ये पढ़ के आना. ठीक है. Now let's now meet tomorrow. कल मिलते हैं. ठीक है. I will see you tomorrow same time at 4:30. आज के डिले के लिए माफी. I hope आपको आज का जादू पसंद आया. I hope you liked the जादू today. See you tomorrow. ठीक है. आज रियल लाइफ जादू था, है ना. चलो कल मिलते हैं.